कुमार। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ पर, और बधाई आपको। बीजेपी 3 राज्यों में, और जो कहा जाता है हिंदी हार्टलैंड में दिल धड़कता है मोदी के लिए, और पनौती जो कह रहे थे आज वो कहीं छुप गए हैं, नजर नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? याद है विमान में हम लोग साथ यात्रा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे, तो आपने बड़े आश्चर्य से अपनी आंख फैलाते हुए मेरी तरफ कहा कि ये क्या बोल रहे हैं। हमने कहा देखेंगे क्या होता है, मैं वहां काम कर रहा हूं। तो आज कम से कम छत्तीसगढ़ बधाई दे दीजिए हमें आप। बिल्कुल, मैं तो तीनों राज्यों के लिए आपको बधाई दे रही हूँ, छत्तीसगढ़ के लिए खास बधाई। नहीं, चलिए धन्यवाद। दूसरी बात मुझे कहना है नाविका जी कि मैं एग्जिट पोल का बहुत सम्मान करता हूं संस्था के रूप में। एग्जिट पोल पर जब मिठाई बंटने लगती है ना, तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचने की जरूरत है ना। हाँ, क्योंकि अब इस मैदान में बहुत लोग कूद जाते हैं। देखिए इस पूरे चुनाव का सार क्या है। मैं तो मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रचार किया, मैं छत्तीसगढ़ में तो था ही 15-20 दिन, वहां तो मैं 3-4 कंस्टिट्यूंसी की व्यवस्था में बैठा हुआ था। देखिए भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बदलाव आया है, ट्रस्ट, नेता के ऊपर ट्रस्ट। और ये जो मोदी जी की गारंटी है, सिर्फ ये जुमला नहीं है, लोग इसको फील करते हैं। और देखिए अभी पूरे आप तो बिहार और हिंदी पट्टी की पॉलिटिक्स को समझती है नाविका जी। आजकल का नया फैशन क्या है, कास्ट सेंसर्स। क्या नीतीश कुमार, क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो एक नया चीट उनको पकड़ाया गया है किसी ने कास्ट सेंसस का। क्या कहा मोदी जी ने कि मेरे लिए 4 ही कास्ट है, गरीब, किसान, महिला, बेटी और नौजवान। और ये सभी जो प्रदेश हैं हिंदी पट्टी के, ये सब में बैकवर्ड पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट है। आप भी जानती हैं, आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं। जनता इससे ऊपर उठती है। हर जगह राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं। अब वो सेंसस उनके परिवार में लागू होगा कि नहीं, ये अलग बात है। अखिलेश पर लागू होगा कि नहीं, तेजस्वी को लागू होगा कि नहीं, अलग बात है। लेकिन ये देश की समझदारी का एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसको समझिए। गुड गवर्नेंस, ट्रस्ट इन द लीडर, और जात के ऊपर उठकर डिलीवरी का विश्वास करना। रविशंकर प्रसाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं एक छोटा सा प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट करती है, इंडिया गठबंधन बॉयकॉट करता है, बीजेपी जीतने के बाद भी अगर पत्रकारों पर ही अपनी राइफल निकाल के रखेगी, तो ये पत्रकार बेचारा कहां जाएगा? इसके बारे में भी जरूर कुछ सोचिएगा रविशंकर प्रसाद जी। मैं आप पर राइफल चला रहा हूं क्या? लेकिन नाविका जी, साल भर आप सवाल पूछते हैं, ये आपका अधिकार है। आज जब हम जीते हैं तो थोड़ा व्यंग करेंगे तो इसमें क्या परेशानी है भाई? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी आप तो जानती हैं, आज आपका दिन है। सटायर, ह्यूमर, व्यंग, ये तो लोकतंत्र का लोकराज है। और 9 रसों में इन तीनों का ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं हैंड ओवर कर रही हूं आपको टाइम्स नाउ स्टूडियो में, जहां पद्मजा जोशी मेरी कॉलीग आपके लिए इंतजार है उनको आपसे सवाल पूछने का। पर टाइम्स नाउ नवभारत पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ओवर टू पद्मजा। Thanks very much, Navika. Ravi Shankar ji, you spoke of the caste census, and the common wisdom is that the idea of caste census was first given to Rahul Gandhi by Nitish ji and Tejasvi Yadav. Do you think after these kind of results, and that too in states which have a large OBC population, we will see the death of this entire call and the idea of a nationwide caste census? All right, we will just try and have that audio fixed. I think there was a bit of a glitch over there. But, we were talking about the main takeaways of Madhya Pradesh. Are there some more OBC areas? Since everyone is now talking about the caste census, can you show us those areas where there is a large OBC population, a backward population, scheduled caste population? Which way have they voted?
Well, these are two important statistics that we're looking at, and I think the demographic that you're talking about comes in these agricultural belts, where 15 Congress, 45 BJP, and this area of rural as well, where 61 versus 128. How does Even this... among the scheduled caste, Yes. 12 Congress, 23 BJP. Yes. Even among the Adivasi youth, it's an even match. Right. Yeah. So do these areas pretty much match the OBC demographic that Padmaja is absolutely. talking about? No, it's one thing is very clear, that the narrative of Jitni Abadi Utna Hak perfectly caters to this area. Okay, जितनी आबादी उतना हक और उतने वोट सीमिटली बीजेपी को मिले हैं, एटलीस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में. रविशंकर प्रसाद जी इज बैक विद अस. रविशंकर जी, आप ओबीसी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे. द कॉमन विजडम इज दैट दिस वाज एन आइडिया दैट वाज गिवन टू मिस्टर गांधी बाय नीतीश जी एंड तेजस्वी यादव. After these results, especially in states where there is a large OBC population, do you think we will see the death of this idea of a nationwide caste census? Let me give my observations to you, Padmaja, in a different context. Dominating caste narrative was an order of the day at some point in time, 90s. What has happened today? Today it stands complemented with good governance. That's the first thing I would like to say. The second thing that's very important, people have realized this whole parchi of caste census is basically linked to their own family welfare. That's very important. And where Modi ji had what said, हमारे लिए चार जातियां हैं, गरीब, नौजवान, बेटियां, महिलाएं, बहनें और किसान. This result underscores that need, that when Modi is saying, the trust factor is in Modi to deliver on the ground. And this particular experience, Padmaja, I would like to share with you. I traveled extensively in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh. I remember in the Rath, in the constituency of Khajuraho and all, with the state president, I was there. There was a big meeting, absolutely in a rural area. The rural market was there. Large number of Ladli Bahan beneficiaries were there. When I was speaking, I found many of them were recording my bhashan through their smartphone. I smiled. I just asked them a question. How many of you got your free vaccination for COVID? All of them raised their hand. हमने कहा, how you got the information as to on which day, which dose will be given? It came on our mobile, you know. I asked them, how many of you are on Facebook or Twitter? Half of them raised their hand. This is delivery, Padmaja. Try to understand what I'm trying to convey. When you seek to change the narrative of development and they feel it, the state level or the national level, then they say what they say is just baat or jumla, and what he is saying is on the ground. That is a tectonic shift in the polity of the country. You must understand. The second thing is, they see that it is Narendra Modi who made a very distinguished scheduled caste leader as the President of India, and very distinguished scheduled tribe leader, Draupadi Murmu ji, as the President of India. All these things and others only cater for the family. This is important. But Modi's trust, his delivery, and the people of India, this is a tectonic shift. But do you think that this is going to be applied to Bihar as well? Because Bihar, Nitish Kumar, or at least his supporters feel, has played a major master stroke, जहां पे उन्होंने कास्ट सेंसस करा के रिजल्ट आउट कर दिया अक्टूबर 2 को, उन्होंने रिजर्वेशन 75% कर दिया है. So do you think that this is going to be an outlier, Bihar, where caste still is going to be the calling card and a master stroke for the JDU RJD? पद्मजा जी जरा रुकिए ना, इलेक्शन होने दीजिए ना, रिजल्ट आपको बताएंगे, हम तो आपसे बात करेंगे ना. Come on, this whole shift, otherwise Lalu Prasad would never have lost. When we were fighting against his corruption and fraud scam, you know, I was a lawyer in the PIL to expose everything, you know it very well. Now Bihar has, and what is Nitish Babu? I don't want to use the great abbreviation which Lalu Prasad uses for him. The people of India know for the sake of power, you can go to any extent. If everything is on caste, then what the hell you are doing for 18 years? Are the people going to ask it or not? They will leave it. We will take care of it. But I am trying to underscore a larger narrative as to how the polity of India is changing beyond caste. Delivery, good governance, integrity,
dedication and the element of trust. This leader cares for the country, cares for us. Final I question. think that is very important. Final question I want to ask you, Ravi Shankar ji. Where does that leave INDI? Even as the 5 state elections were underway, Nitish Kumar was very angry. He said, आजकल कांग्रेस को टाइम नहीं है, वो चुनाव में लगी हुई है. अब 3 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को there is going to be an informal meeting. How do you think equations are going to change? Already given how Akhilesh Yadav has spoken out, Nitish Kumar not too happy. What happens to INDIA from here? And Nitish ji in particular. Padmaja, in this whole India alliance or Indic, whatever you call it, this whole expression of formal to informal to super formal to totally informal to whispering, come on, these are past is past. But yes, this is going to lead to a lot of volcanic eruptions within that congregation. They are going to say कि पहले कांग्रेस पार्टी अपनी औकात पे आओ तो हमसे बात करो. I hope you are understanding. तो आगे आगे देखिए होता है क्या, देखा जाएगा. चलिए आगे आगे देखिए क्या होता है. But people of India are going to give a bigger majority to Modi ji in the year 24. उसका आगाज हो चुका. We will hold you to your word, specifically in Bihar as well, since you have promised that we are going to discuss that. Thank you very much, Mr. Ravi Shankar Prasad, for joining us. Let's cut straight across to